Hello everyone, welcome to Idols of Pune. On behalf of VNWC's team, I am Romal Surana. Welcome you all to meet yet another one of the best, finest diamonds of Pune who represents Idol of Pune. It is very interesting that when women come to their when show their potentiality, they can do lot many things. So our guest today is one of those. You cannot guess her age by looking at her. Beyond her age, she talks about. Beyond her age, she has different things to tell you about. And let me tell you, she's one of the most fittest lady I've ever seen. So if you want some fitness tips, we are going to talk to her about this. So a small introduction, because this introduction is very small to talk her about. But yes, she's a founder of Fit Lifestyle, co-founder Inspire Beyond Motherhood Awards, author for Mom by Mom, founder Fitzy Facebook group, a social worker and corporate wellness coach and nutritionist. So जब हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, तो कौन सा नाम आपके दिमाग में आता है? आई एम श्योर आप सभी ये नाम जानना चाहेंगे. So let me introduce you to our guest today is Nirupama. Hello Nirupama. Thank you so much, Romal, for a wonderful introduction. I'm already flying high in the sky. First of all, thank you so much, VNWC Bobby Karnani team, for having me here and calling me an idol of Pune. I'm It's a so pleasure to overwhelmed. have you. It's really a pleasure to have you because the things that you do is something beyond normal would do it. That is the reason you're the idol of Pune. While going through this, as I said, आपकी एज आपके फेस से आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है. आप फिटनेस कोच है, तो few tips for the ladies who wants to look as fresh, as good as you, or maybe something beyond to enhance their beauty. So, Romal, when you're asking about the fitness tip, मैं fitness tip नहीं बोलूँगी. I would just give you one mantra that stay positive in your life and be little selfish. हम लोग mothers का क्या होता है, ladies का क्या होता है, we always keep our families first. बच्चे को खाना पहले खिलाना है, हस्बैंड का टिफिन तैयार करना है, इन लॉज का ध्यान रखना है. देन एट द एंड वी जस्ट ईट ब्रेकफास्ट, सो वी जस्ट कीप आवरसेल्फ एट लास्ट when it comes to family. But I would say Absolutely. same time when you say that you do all these things to keep your family happy and you want to be caring mother, or so I would say it, until and unless you won't take care of yourself, you cannot take care of your family. So for that, you need to take charge of your health, and it's okay to be little selfish. We Agree. women always remain in mother guilt, that okay, what my husband or in-laws will think if I eat first, or if I do something first at my end, then I will be asking them. But I would say, if you are the boss of your family, if you are controlling your family, you just take control of your health first. So just, it's very simple, like I hear ladies that, Nirupama, with so much of hectic hours and work schedule, and especially we are working from home nowadays during this pandemic, we don't get time to exercise, we have small kids. I just suggest them, it's exercising doesn't mean that you need to join some fancy gyms or fitness center or maybe online classes. However, I would recommend that for sure. But to begin with, just to play music and dance along with your family, with your kids in hand, I'm sure they would love that, such energetic mother Yeah, is in the house. So definitely. you don't need to make an excuse that you don't have time to exercise. Dancing is the best exercise and everyone loves that. So I mean to say, you need to take charge of, especially during this pandemic, we learned it hard that health is most important thing. So if you are taking charge of your health, then it means you are setting some good example in front of your kids. They would So see that, okay, true. my mom is fit because they are not going to school, no outdoor activities. So they would, in fact, they would say, okay, let's do something, let's do some kind of activity at home. So make it as a fun activity. Don't get pressurized, okay, we need to sneak out that 1 hour or 45 minutes daily. Just have fun with your family.
and eat I right. think It's having fun with the family would definitely makes you feel happy, and yes. once you are happy, I'm sure that reflects on your skin. That is what Nirupama wants to say. I'm Absolutely sure right. that's my mantra. I just, Romal, that's my personal experience. I cannot remain in sad or low mood or in stress more than 24 hours. That's my maximum limit. However, I just keep that for 4 to 5 hours. That's it. Once this limit is over, I take charge of my happiness in my hand. I just don't bother about anything then. I just fix the Wow. problem within 4 to 5 hours, and I just don't stretch that stress or sad moment in my life. That's a mantra that for me, my happiness is most priority in the life. I don't bother about anyone. If I'm happy, I That's know that I such will a be good imparting thing. those positive energy throughout the world or around my people. So happiness attract happiness. That's so true. Positive. That's so true. And you know what? You are such a person who is very innovative. That is why you have come up. You are a co-founder of Inspire Beyond Motherhood Awards. And what is it? Because after motherhood, you know you have one kiddo or two kiddos, and your life goes on. But your award Yes. starts after that. So what is it that you're doing with this awards and all? So, Romal, we started this awards 2 years back before pandemic. So this concept came into my mind. So when my partner Prerna, she is a leading mom influencer and mom blogger at Mumbai, and when we thought that there happens so many awards and recognition for women, but no one recognize efforts of mothers, because mothers are those who actually sacrifice their careers after becoming mothers. होता क्या है कि husband job नहीं छोड़ेगा because I'm pregnant, so I will be sacrificing my career. So they just cannot fulfill their dreams when they saw. So we created such platform for those mothers who took charge of their careers and took that flight and restarted and reinvented their career after becoming mother, after a career break. So we gave award to those mothers in the different categories. There are various categories like women entrepreneur and writers and chefs, bakers and influencers. So there are various artists. There are many categories, and we are so blessed that we got connected with such a beautiful moms, working moms now pan India. That first event we did at Mumbai Orchid Hotel, along with all the page 3 and the celebrities, they supported our cause. And the last year, because of pandemic, we did it online, and third season we are coming in this August or September. So I would request all the mothers who have restarted and reinvented their careers. So Inspired Beyond Motherhood season 3 will be coming soon, so please register yourself there. Yeah. Definitely at VNWC, and definitely Nana Yan Foundation will support you for that, because Thank I you am so sure all mothers would be looking forward for this recognition. And you know, this is something that a woman looks forward for. As a much. mother, I am sure I have started my journey once my son was 3 months old. Before that, I was working with JP Morgan Chase. And Yeah. you know, and with 3 months child, I started working, so I can understand what it takes to start a Yes. second Yes. journey Now you can altogether. relate. I'm sure that you can relate it very much. Yeah. And this is kind of award. This is one of its own kind of award in first time in India, That's true. especially for mothers. Yes, And I that's the mean, reason we get such a good support from all the leading community members and the founders and the big names. They are associated with us. that's nice. That once you do something which is unique and which is really helpful for others, you know, even the God helps you with sending certain people in your life that really makes your journey little smoother. Yes, yes, Roman. True that. Yeah. So, you know, you talked about fitness. You talk about being happy. But जब हम fitness की बात करते हैं तो 80% is the food that we eat and 20% is the exercise, right? जब वो 80% के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ना न्यूट्रिशन की रेसिपीज पता नहीं होती है. हम कहाँ से हेल्दी रेसिपीज लेकर आए, हम क्या ना एक्सपेरिमेंट करें. हर बार ना यूट्यूब पे जाना,
इतना सर्च करना, हर रेसिपी को ट्रायल एरर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. आप इस बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? बिकॉज आपकी जो बुक है फॉर मॉम बाय मॉम, व्हाट डज दैट टॉक अबाउट? think we're connected. So, Romal, we started. So, this book is specially for the kids. However, each and every family member can follow these recipes because when we talk about kids' health, it's the most ignored subject in our country. And in our country, if you see, we are in the obesity, child obesity, we are at number 2 in world, and at the same time we call our country as a young country, so see what kind of future generation we are making. So once we were I was taking one live session with the Facebook community, and there were many ladies who asked me about this kids nutrition, and they were so confused, especially working mothers, that we really don't know what to give them in the tiffin, especially for the schools, and what to give them in the breakfast. So this topic actually I gave a thought, and I looked around, and I found that there is no such platform or any information on the internet wherein we can collate very good recipes and put it all in the book, and wherein 28 days tiffin menu with the grocery list, because we know that we are lazy parents, or we can make an excuse, okay fine, maid bolegi didi ye to kya banao, ye ghar pe nahi hai, with the grocery list, weekly grocery list. So we created this recipe book in which there are very healthy recipes, breakfast recipes especially, which one can give to their kids for the tiffin, however we are at home, but anyone can follow that. And with this we have a very nice bit emotional stories of mothers. Like होता है ना कि हर कोई बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो we are associated with such kind of emotional stories as well, how this food is making them connect with their child. Wow. So I wrote this book on kids nutrition, and many other topics I covered on kids nutrition in book. Yeah, and this book is available in the ebook format on the Kindle Amazon. वाह, लवली. सो मदर्स, बच्चों की टिफिन की प्रॉब्लम हो, उनके न्यूट्रिशन की अगर से झंझट हो, तो प्लीज बाय मॉम फॉर बाय For मॉम moms by फॉर मॉम. moms. यस, Yes. फॉर मॉम्स बाय मॉम्स डेफिनेटली लीजिए. जाइए अमेजोन पे, ऑर्डर And कीजिए, बिकॉज बच्चों का न्यूट्रिशन it's मदर के most लिए सबसे important. ज्यादा And प्रायोरिटी होती है. this is not only a recipe book, as I told you, that I given a very good information on the kids nutrition. Like there are fussy kids who don't want to eat homemade food, so what tricks mothers can follow to make them eat. So there are many other very good topics we have covered in this book. Yeah. See, so it is a complete thing where you can understand the child nutrition. वैसे भी अभी थर्ड वेव बच्चों के Yes, I was just going to tell you this. बच्चों के ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है. So why not wait? Why do you want to wait for third wave? Make your child immunity strong. Get the book, start Yes. working on it, make your knowledge thorough before कुछ और हो, उसके पहले अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिल्कुल उनके ठीक है. ये बुक स्ट्रॉन्ग अगर कीजिए. आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आई एम श्योर व्हेन यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर किड्स हेल्थ, सो that will be really helpful to build them their good immunity. Absolutely, and we have full trust on you. The book that you have done, a lot of research would have gone behind that. I am so Yes. sure about it. So, Nirupama, nutrition, fitness, then awards, then you are an influencer too, which I see, and you have a Facebook group of Fitzy. What is Yes. it all about? You're a complete package of fitness and ग्लैमर एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो हम चाहते हैं एक ममा के अंदर होना, कि मम्मा यंग भी दिखे, फिट भी दिखे, ग्लैमरस भी दिखे, वो रिकग्नाइज भी हो, या कंप्लीट पैकेज. और ममा इन्फ्लुएंसर भी. खैर ममा तो अपने घर में इन्फ्लुएंस करती है, बट आप भी काफी इन्फ्लुएंस करते हो. तो ये जो चीज है, ये क्या है? So first of all, I would like to talk about my Facebook group community that is called Fitzy. So this group we created for this is not a commercial group. This is a social group we created just to influence and motivate people that you should come out from your comfort zone and start doing some kind of activity. Because when we do it all together, it
become easy for us when we see, for an example, I'm doing some kind of exercise, and Romal, you are seeing me daily that I'm doing exercise. Somehow, back of the mind, that will remain in your mind. Okay, Nirupama is into exercise. I should also start doing this thing. So it's kind of getting inspired and inspiring other people as well. So this is the Fitzy group wherein we all members post what we do on daily basis, exercise, what we eat. There happen many kind of activities there. So we, yeah. So this is the Lovely. Facebook group. Yeah, So lovely. If you want to begin something and want to continue and you really need motivation, I think we can. this कुछ is the मत best करो, group that you can कुछ मत join and करो, get ग्रुप yourself ग्रुप inspired. सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करो और बस हमें देखना शुरू करो. आई एम 100% श्योर आफ्टर 1 month, 2 months or 3 months, somehow you will get inspired and you will take charge of your health then. See, she is not telling you even to start. She just want you to see. और देखना कितना आसान है, we all know that. लगा लो, देखो. बट इनके करने से यदि आप इंस्पायर हो रहे, तो आई एम श्योर ये अपॉर्चुनिटी ममस आप मिस मत कीजिएगा, जो भी हमें देख रहे हैं. तो कई So बार होता Fitzy, है कि यार खुद के ऊपर कैसे स्ट्राइक FITZY. करूं. हाँ जी. I was just spelling the telling you the name of my group, FITZY. Fitzy. Yeah. Fitzy. Yes. Comment section में हम लिख देंगे so that you can go there, and even we will send the link in fact. And Bobby is saying yes dear, which means कि वो भी ready है करने के लिए. Even she wants to get fitter. I'm telling you, Bobby is one of the most beautiful ladies, I'm and she is in the midst of sure getting fitter now. I Uh, would want us some kind of energy from Bobby and her team. They should pass that energy to me someday. एनर्जी टीम का तो नहीं पता, बट बॉबी जहाँ पे रहेगी वहां पे एनर्जी इतनी होगी ना कि आपको एनर्जी की कमी नहीं होगी फॉर श्योर. सो दैट She's इज really व्हाट kindly. हमारे बीएनडब्ल्यूसी का जो सन है वो बॉबी है, जो हम सबको I'm एनर्जी sure. देता है. I'm sure. I'm sure. Yeah. सो यू नो द Yes. वे शी इंस्पायर्स अस. आई एम श्योर जो भी आपके ग्रुप पे है वो आपको देख के इंस्पायर होते हैं. दे गेट द एनर्जी फ्रॉम यू. यू नो यू सेड यू आल्सो डू सोशल वर्क. सो अभी आपको एक कोविड सपोर्ट ग्रुप में भी यू वर डूइंग supporting lot of people with regards to COVID, when COVID patients बोलने them peak पे थे, you were doing a lot of work. So what was it? Don't ask me. I really don't want to see that phase again. Maybe I'm a bit, apprehensive कि third wave नहीं आए. I always pray from God because the kind of people and patients and we have seen a very इमोशनल थिंग्स. लाइक अभी भी मैं ये बात बोल रही हूँ तो मेरे को गूजबम्स आने शुरू हो गए हैं कि कैसा हमने उस समय में फेस देखा है. सो दिस पुणे कोविड सपोर्ट ग्रुप, सोनिया कंजेती, शी क्रिएटेड दैट ग्रुप एंड वी वर टीम. So we handled that group. There were happened like we started with this 100-500 group, and within 1 month there were 11,000 members whom we provided help of ventilator beds, oxygen beds, and plasma and medicine. And this group was a support group, and I would say that I've been very lucky and blessed that I could help people the way whatever the way I could. And same time it was really emotional. Why I'm saying and I'm getting goosebumps because for example, I'll give you one example. Like so I was handling each and everything in this group, like to ventilator critical cases, providing them the support. So you must be aware that how difficult it was to get ventilator bed that time. So at night, through our resource, and those whenever we gone to the ventilator bed, it was not available. And there was no such resource that we could see that this ventilator bed was available. But we had some kind of resources that अगर patient discharge होता था, हमें पता चल जाता था कि ये bed खाली होने वाला है. So at night, 11 p.m. once I received call from my resources that Nirupama, we will be having 2 ventilator bed by रात को 1 बजे तक if you want to give it to someone. And then I went to the list कि कौन से group में request आई हुई है, and the people who want this ventilator bed, there were 7 to 8 people who actually wanted ventilator bed. But it was I had to decide कि मैं किसको ventilator bed दूँ और किसको नहीं दूँ. You could make out the situation, how difficult situation that was कि मेरे को किसी को देना है ventilator bed, is किसी का जान बचाना और किसी को choose करना.
and because we people are not frontline warriors, we are not doctors, because उनका क्या होता है, इमोशनल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होता है, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम लोग को ये सिचुएशन हैंडल करने में बहुत तकलीफ होती है, बट स्टिल आई हैड टू रिमेन लाइक वेरी फोकस, कि मुझे लग रहा था कि नहीं अब ये सिचुएशन आई है, तो कुछ क्राइटेरियाज मैच करके आई गेव 2 beds टू समवन, बट बाद में बुरा लगा, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन भी होते थे, बट फिर मुझे लगा कि अगर मैं इमोशंस में रहूंगी, आई वोंट बी एबल टू वर्क, सो आई हैड टू कीप माई इमोशंस एट साइड, देन आई एक्चुअली वर्क एकदम सीधा ऐसा करके जैसे कि एक काम पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं. एंड उस टाइम पे आई माई सेल्फ वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड ड्यूरिंग दैट पीरियड, सो तो इट ये वॉज भी एक खुद सफर कर रहे हैं कोविड से और सामने वालों को हेल्प कर पा रहे हैं, दैट इज समथिंग अमेजिंग. एंड आई एम श्योर यहाँ पे जो भी देख रहा होगा, वो जो फेस थे, वो जो कुछ मंथ्स थे, वो आई फेस था, एम यू वोंट श्योर. बिलीव. ऐसा होता था रोमल की प्लाज्मा का, जैसे कि हमने एक डोनर बहुत मुश्किल से ढूंढा, क्योंकि प्लाज्मा डोनर नहीं मिल रहे थे, एवरीवन नोज दैट दे वर, सो ऐसा होता था कि हमने बहुत मुश्किल से प्लाज्मा डोनर ढूंढा, उसको हॉस्पिटल तक भिजवाया, कैब करके दिया, बिकॉज ऑनलाइन क्या है, सबको दिख रहा था व्हाट वी आर डूइंग, बट ऑफलाइन थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. भेजा वहां पे, उसे प्लाज्मा डोनेट किया, नेक्स्ट डे पता चलता है दैट पेशेंट स्टिल कुडंट सर्वाइव. So we have seen such cases. There was a young boy, 24-year-old. He wanted to have admission in particular hospital. He was on ventilator. So we provided him that particular hospital. He stayed there for 7 to 10 days. Then uska bill बहुत heavy चला गया. Then we got to know that hospital has charged higher than the government charges a fee. Then we hired an advocate to waive off that charges. देन वो चार्जेस हमने वेव ऑफ भी करवाए, तो 2 दिन के बाद पता चला दैट बॉय इज नो मोर. सो आई मीन टू से आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, तभी मैंने बोला कि बोलते समय भी मैं बता रही हूँ, बट बैक ऑफ द स्टेज ऑफलाइन जो चीज़ें हमने देखी हैं, और वो ऑनलाइन पे हम बता ही नहीं पाए कि ग्रुप में क्या चल रहा था, और पीछे में हम लोग किस तरीके से टीम काम करी थी. सो इट्स ऑल टीम वर्क. आई वुड से दैट आई रियली डोंट वांट टू सी दैट अगेन. आई वुड से ओनली दैट थिंग. I think प्लीज these are गाइस. the wonderful experiences that you had, and that is the service that you have provided to the society with wholeheartedness, without having any expectation. And Yes, and I'm sure once you do that, things will come back to you, because it is always said, "What you give come back to you in many folds." I'm So sure, but we I your blessed gift. that we got blessings of thousands of people, Romal. I would say that if I was able to save one single life, my life is successful. Like, I'm so blessed. I don't want anything in life in that way. Yeah. Lovely. What a lovely thought you had. Viewers जो हमें देख रहे हैं, यदि इंस्पिरेशन की कमी यहाँ से अगर से आपको मिलती है, यहाँ से वैसे की इंस्पिरेशन की कमी आपको मिलने से रही, ये भर भर के इंस्पिरेशन मिल रही होगी आज आपको, फिट रहने की, अच्छे रहने की, अलग काम करने की, उसके बाद में इतना कुछ सफर करने की, इमोशनली स्टेबल रहने की, कोविड में होते हुए भी हेल्प करने की. आई थिंक एक चीज इतनी इंस्पिरेशनल है कि आप किसी भी मोमेंट पे खुद को लो फील ही नहीं कर सकते जब आप निरुपमा को देख रहे हैं. तो अगर से ऐसा कुछ आपके मन में है, लो फील कर रहे हैं, देख लो निरुपमा को. आई एम श्योर आप भी बाउंस बैक कर जाओगे. एंड दैट इज द रीजन she is idol of Pune, and we are taking a interview. It's a privilege to have such a wonderful diamond with us. So, viewers, with this, we have come to an end of our today's session. मन तो नहीं करता निरुपमा को बोलूं बाय निरुपमा, हम फिर मिलेंगे, बट बाय बोलने की आदत हमारी है नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि स्टे कनेक्टेड, हमेशा साथ रहिए, क्योंकि किस मोड पे किसकी कब हम आपको बुलाए, कब आप हमें बुलाए, हमें नहीं पता. तो जुड़े रहिए हमसे. हम आपको कल एक नए डायमंड के साथ में मिलेंगे, सो दैट जो इंस्पिरेशन आज आप यूज करेंगे, उससे भी ज्यादा कल शायद कोई आपको और इंस्पायर करे. बिकॉज क्या पता, किसी का एक स्टेटमेंट, किसी की बोली हुई एक चीज किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है. और हम आई लव पुणे में वही करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज इस पैंडेमिक से यदि आपको लड़ना है, इस पैंडेमिक में यदि खुद को चेंज करना है,
तो उसमें पता किसकी एक चीज बदल दे. सो वही I सोच would, के घर में. yeah. जी हाँ निरुपमा. I would say last thing, Romal, here, since we are talking especially for women or such a beautiful platform. And during this pandemic, I understand that people are going through tremendous stress, maybe financial, emotional, and so many others and stress they are going through. I would just say them that happiness, again दोबारा बोल रही हूँ, just one thing at one time, live your life at fullest, because अभी life इतनी unpredictable हो गई है. Never ever keep any kind of grudges with anyone. I would say that हम लोग बोलते जाते हैं कि अच्छा कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, वैसे बोल. You should, let go all these things. लेट गो करना सीखना चाहिए. Absolutely. एंड ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करूं कि जो मुझे एंड ऑफ द टाइम स्ट्रेस फ्री रखे और खुश रखे, एंड उसको आप करो. मे बी यू कैन रिवाइव योर ओल्ड हॉबी. और बस ये क्राइटेरिया होना चाहिए, उसने क्या बोल दिया, मैंने क्या सुन लिया, मेरे साथ उसने ये किया वो किया. दिस नॉट टाइम टू पे फोकस ऑन सच थिंग्स. सो दुनिया वाले बोलते रहेंगे, कहते हैं ना कि अपना Absolutely. जिंदगी जी लो, कैसे जी लो, फुलफिल योर ड्रीम्स. जो शायद आपने सोचा हो कि मैं ये करना चाहती हूँ, डू इट राइट नाउ, डोंट वेट फॉर द टाइम टू कम. या एब्सोल्युटली. सो लेट्स समराइज कि पूरे सेशन में हमने निरुपमा से क्या क्या सीखा. फर्स्ट फर्स्ट क्योंकि हमारी ये आदत है कि सेशन खत्म होने से पहले हमारे गेस्ट से हम क्या सीखते हैं ये हम सबके साथ शेयर करते हैं, सो दैट इट इज अ रिविजन, एक क्विक रिकैप हो जाता है हमारा. सो फर्स्ट चीज हमने निरुपमा से क्या सीखी, बी सेल्फिश. किसके लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि हमारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो हम अंदर है वो हम बाहर है. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फिश. सेकेंड, अपनी बकेट लिस्ट में काम करते रहो. क्या पता उस बकेट लिस्ट की कौन सी चीज कब काम आ जाए और आप कुछ डिफरेंट करने लगो. इसके लिए तीसरी चीज निरुपमा से जो हमने सीखी वो क्या थी कि यार फिटनेस यदि शुरू करना है तो डांस के रूप में स्टार्ट करो, फैमिली के साथ में करो. मूव करते करते क्या पता कहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाए और हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाए. चौथी चीज जो हमने निरुपमा से सीखी वो क्या सीखी कि ठीक है तुम्हें फिट नहीं होना है ना तो सिर्फ देखते रहो. तुम जब देखते रहोगे क्या पता तुम्हारे अंदर वो इच्छा जागृत हो जाए. नहीं नहीं, कर भी लो प्लीज, देखो मत. मुझे याद आ रहा है बाबा रामदेव जी को सब लोग देखते हैं, करते नहीं है, बेड पे बैठ के बस वॉच एंड लिसन टू हिम. सो वैसा बट भी द नहीं. थिंग इज आई एम श्योर अब करवाते ही ऐसे होंगे कि लोग ऑटोमेटिकली ट्राई करना स्टार्ट कर दे. इतना डिफिकल्ट नहीं लगता होगा. सो देखने के साथ में डेफिनेटली आप करना खुद ब खुद स्टार्ट कर देंगे. एंड लास्ट चीज, जब हम किसी चीज में डेडिकेटेड हो जाते हैं तो फिर अपनी हेल्थ से ज्यादा जब हम सोशल वर्क करने लगते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना इमोशनल बैलेंस मेंटेन करें. क्योंकि लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं जहाँ पे हमारा कंट्रोल खुद पे नहीं होता है. हमें कुछ चीज करनी पड़ती है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बैलेंस मेंटेन बहुत जरूरी करते हुए ये लाइफ चलिए. सो ये ब्यूटीफुल 6 लेसन्स हमने निरुपमा जी से आज सीखा है. सो यू ऑल, लास्ट यस सॉरी मैं तुम्हारा टाइम ले रही. लास्ट इज लेडीज के लिए स्पेशली, मेक योर सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. यस, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव बॉबी की टीम ने ऑलरेडी ये आपको बिजनेस ग्लोरी जो है नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, wherein you can seek for some loan to start your small business. They are supporting, Vimannagar team is supporting such ladies. So financial independent इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है आज की डेट में कि हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं लाइफ को कि नहीं मेरा हस्बैंड कमा रहा है या मेरे बच्चे होंगे. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. व्हेन यू विल बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, देन आई एम श्योर बाकी सब चीज़ों से आप फाइट कर पाओगे. सो मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप इसको सोचिए मत कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है. मे बी आई एम नॉट सेइंग दैट एकदम से आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट करिए. स्टार्ट फ्रॉम अर्निंग स्मॉल थिंग्स, मे बी जो आपको खुशी देती है, हॉबी है, कुछ है, बट मेक योर सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड विमान नगर क्लब आपको इतना, VNW से इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दे रहा है. आई गॉट सो हैप्पी जब मैंने यहाँ सुबह ये पोस्ट पढ़ा था, बिकॉज ये बूस्ट करने के लिए लेडीज को बहुत ज़रूरी है, बहुत. क्योंकि होता कि जब हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट की बात करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे को पैसा चाहिए. तो अब मैं गोल्ड बेचूं या नहीं बेचूं, हस्बैंड से लूंगी तो वो बोलेगा कि तेरे को काम करने की क्या ज़रूरत है. तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना, एंड प्लीज़ प्लीज़ लेडीज़ आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, एंड जो भी आपका पैशन है उसको आगे बढ़ाओ, एंड बी एन एंटरप्रेन्योर.
लवली 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 लवली। सो सेवेंथ चैप्टर, सेवेंथ लेसन क्या सीखा अभी हमने? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। और एथ है कि ग्रजेस, ग्रजेस, किसी के लिए बैड फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग होल्ड ऑन मत करो, लेट गो करो। एंड लास्ट थिंग, टेंथ, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इज द की। सो ये 10 लेसन आज हमने Perfect. निरुपमा से लिए हैं। सो निरुपमा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम Thank to all you the so viewers. much, Romal. Yes, thank you so much. It's my privilege to learn so many things, and I'm sure जो भी viewers है वो आपसे काफी इंस्पायर्ड हुए हैं, इसलिए हमें इतने सारे लवली कमेंट्स आ रहे हैं। बॉबी साहब, शालू, कुंदा, सोनल झवेरी, मीनाक्षी जी, सभी कमेंट सेक्शन पे मैसेजेस कर रहे हैं। So thank you so much, people, those who Thank are you so joined us. much. एंड ऑल द व्यूअर्स, स्टे ट्यून। कल फिर मिलेंगे हम सेम टाइम पे एक नए व्यक्ति के साथ में, जो आपको फिर से एक इंस्पिरेशन की घुट्टी देगा। टिल देन, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय। Bye bye. Love you all.